Hello everyone and welcome to day 6 of the daily drill which is geared towards helping you prepare for XAT 2025. Now in this video we are going to discuss 5 questions from the verbal and logical ability section. So all these questions are verbal ability questions. All of them are stand-alone questions. So what you need to do is you have to look at the question first, try it out on your own and then have a look at the solution that will follow. तो एक बार देख लेना, try कर लेना, then have a look at the solution. And अगर कुछ भी है something that you're not able to figure out, let me know in the comment section and I will try to help you out with your query. So before we start, there is one small thing that I want to take you through, which is the crash course for the XAT. So it has recently been launched and it's been more or less 1 week since the time the course has started. So if you are planning to take the CAT, do have a look at the course. The link to the description or the link to the course will be in the description box below. So एक बार देख लेना and if you have any queries regarding the course, let me know. Now we will look at the first question. So first question, fill in the blanks wala question hai. There are 3 blanks that are there and there is a sentence that has been given to you. So dekh lena, what do you think is the best or the best set of words that will fit these blanks that we have here. So let's look at the question now. A map is a useful metaphor. Metaphor मतलब एक चीज जो दूसरी चीज को डिस्क्राइब करती है. So let's say you are not able to tell someone what exactly that thing is, तो हम लोग यूज करेंगे metaphor. Metaphor करने से क्या होता है? I will tell you that okay, this is similar to something like this. तो हम लोग एक easily एक convincing argument कर सकते हैं. So a map is a useful metaphor for our brain when talking about something. ठीक है, तो ब्रेन को जब मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई एक चीज को, प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन आई कैन यूज मैप. तो मैप पे बहुत सारे इंटरसेक्शंस होते हैं, बहुत सारे नोड्स होते हैं एंड यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. दैट इज बेसिकली व्हाट मैप्स लुक लाइक. तो ब्रेन के बारे में कोई तो एक चीज जब मैं बता रहा हूँ, आई कैन यूज द मेटाफोर ऑफ मैप्स देयर. Because at its most basic level, our brain dash to be our atlas of sorts. So brain धीरे धीरे डेवलप होके शायद atlas बना, या something happened to the brain, it evolve होकर वो atlas बना, कुछ तो हुआ अपने brain को, and that became our atlas of sorts. A system of routes dash to navigate us toward just one destination, staying alive. तो पूरा का पूरा ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव दैट एग्जिस्ट व्हिच इज स्टेइंग अलाइव. तो उसके लिए तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छे से इक्विप्ड है. From the options below, choose the set that most appropriately fills up the blanks. तो ये दिया हुआ है. So let's see. तो यहाँ पे talking about some phenomenon that is related to thinking, right? So कुछ भी हो सकता है, perception है, understanding है. Talking about connections, not so much. So I'll not like C as the answer. While talking about design, not so much. हम लोग brain के कोई thought process की बात कर रहे हैं. Comprehension could be possible. तो हम लोग comprehension, understanding या perception ये सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं. So options C and D will not be right in this particular context. Then, because at its most basic level, our brain कुछ तो हुआ था, evolve हुआ था या कुछ तो change हुआ था, there was some progression that happened, right? And it became our atlas of sorts. So first option के अंदर we have been given evolved, second option के अंदर we have been given progressed, right? So at our most basic level, our brain progressed to be our atlas of sorts, possible. Our brain metamorphosed to be our atlas of sorts. Now metamorphose जो है ना काफी literal हो जाता है. So I don't know if you have heard of this book called Metamorphosis in a way, Franz Kafka. Those of you who know, you might be knowing this. So morphology जो होता है ना, morphology basically means the way in which you look like. ठीक है, metamorphosis basically means literally you have changed your appearance. अब यहाँ पे literally change our appearance नहीं है, अपना brain literally atlas नहीं बना है. So E will again not be our answer. तो A या B में से कुछ होगा. लास्ट वाला ब्लैंक देख लेते हैं. A system of routes dash to navigate us towards one direction. So design क्या हुआ है, या फिर the system of routes that exists to navigate us towards one direction, toward one direction which is staying alive. So option 1 के अंदर the third blank is designed. हाँ, system of routes हम लोग डिजाइन कर सकते हैं. System of routes shaped, हम लोग system of routes को shape नहीं करते. We shape a clay or a piece of clay, या कुछ तो हम चीज को डो या किसी को तो हम शेप करते हैं, बट सिस्टम ऑफ रूट्स को हम शेप नहीं करते, राइट? सिस्टम ऑफ रूट्स को हम डिजाइन करते हैं. And that is why the correct answer here is option A. That is going to be perception, evolved and design. So if you can read it entirely, a map is a useful metaphor for our brain when talking about perception. तो हम लोग कैसे perceive करते हैं चीजों को. Because at its most basic level, our brain evolved to be our atlas of sorts, a system of routes designed to navigate us toward just one destination, which is staying alive. Let's look at the next question. So again, have a look at this question and then have a look at the solution that is going to follow. So dash medicine has been operated by trial and error. Dash medicine has been operated by trial and error. It could be
यू कैन से ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, या फिर एविडेंटली, या फिर मोस्टली, जो भी है मतलब। सो बेसिकली कुछ तो है, मतलब बहुत टाइम से ऐसे चल रहा है, या मतलब यूजुअली ऐसे हो रहा है दैट मेडिसिन हैज बीन ऑपरेटेड बाय ट्रायल एंड एरर। इन अदर वर्ड्स डैश। अब ट्रायल एंड एरर मतलब तुक्का, राइट? मैं कुछ तो एक तुक्का मारा और वो चला तो चला, अगर नहीं चला तो नहीं चला। तो तुक्के से चल रहा है बेसिकली मेडिसिन, दैट इज व्हाट इट मीन्स हियर। We know by now that there can be entirely dash connections between symptoms and treatment, and some medications succeed in medical trials for mere random reasons. अब random reasons का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई connection शायद exist भी नहीं करेगा, right? So it could be entirely, how do I put it, irrational connections या entirely inexplicable connections that are there. तो symptom और treatment के अंदर कुछ भी रैंडम चीज हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शंस आर देयर, या फिर एकदम ऐसे सेरेंडिपिटी वाली चीजें हो सकती है, लाइक यू आर जस्ट लकी दैट देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो ये सिम्टम था, मैंने ये मेडिसिन दिया, यू फेल्ट बेटर, आई एम एट्रीब्यूटिंग यूर गेटिंग बेटर टू द मेडिसिन, विच मे और मे नॉट बी करेक्ट। सो रैंडम रीजंस की वजह से भी सक्सेसफुल हो सकते हैं मेडिसिन। सो दिस इज थोड़ा सा मतलब टेलिंग यू दैट ट्रायल एंड एरर से चलता है एंड थोड़ा सा लक पे चलता है, and there could be entirely random connections or there could be entirely serendipitous connections, मतलब lucky वाले connections हो सकते हैं जिसकी वजह से maybe some treatments are successful. Let's see. So first one, formerly medicine has been operated by trial and error. Formerly मतलब अभी कैसे कर रहे हैं? तो former के आगे एक latter होना चाहिए, तो formerly की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, आज की बात कर रहे हैं. So it's not formerly per se. Traditionally, medicine has been operated by trial and error. Makes sense. Initially, medicine has been operated by trial and error. Not really. Initially, medicine had been operated by trial and error. But उसके आगे कुछ contrast भी तो होना चाहिए जो नहीं आ रहा. So initially cannot be my answer. Periodically, medicine has been operated by trial and error. It's not about periodically. It's about consistently it has happened. But बहुत पुराने जमाने से ये चल रहा है. Historically, medicine has been operated by trial and error. Makes sense. So B and E are the only ones left after the first blank. Next blank देख लेते. In other words, मतलब randomly, luckily, ऐसे लक पे चल रहा है काफी ज्यादा. So analytically basically means that मैंने बहुत ज्यादा सोचा है चीजों के बारे में, then I have done an analysis and then come up with a solution. This one says arbitrarily. Arbitrarily is a better word. Arbitrarily मतलब randomly. मैंने कुछ इधर उधर का ट्राई किया और कुछ लग गया, तो arbitrarily मैंने कुछ तो एक arbitrarily मैंने कुछ तो एक ट्राई किया है and that worked. So that tells me that B is not our answer. E should be our probable answer. Last blank भी देख लेते हैं. And there can be there can be entirely dash connections. अब dash connections वैसे luck based connections, random connections. तो यहाँ पे fortuitous दिया है. Fortuitous is another word for fortunate. तो serendipitous जो मैं बोलता हूँ. So that is basically what we are looking at. So the correct answer here should be option E. Let's look at the next question. So have a look at this one and then have a look at the solution that will follow. यहाँ पे अपने को incorrect sentences ढूंढ के निकालने हैं. So figure out which pair groups of sentences are incorrect in nature. तो देख लेते हैं. I have good knowledge of German. अब ये जर्मन कौन है? Is German the name of a person? Is German the name of a German shepherd? तो किस कौन सा जर्मन? We don't know. I have good knowledge of German what? I have good knowledge of the language German, right? और I have good knowledge of the German language. ये हम बोल सकते हैं. I have good knowledge of the German geography, German history. तो जर्मन क्या? We don't know. That's why one is not exactly grammatically correct. सो यहाँ पे अगर देखते हैं ना, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी मेरे निकल जाते हैं बिकॉज वन इज डेफिनेटली रॉन्ग. टू देख लेते हैं. एक्सेप्ट फॉर राजीव एवरीबडी वॉज देयर हो सकता है. अब एवरीबडी वॉज देयर के एवरीबडी वेयर देयर, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट एवरी, एवरी इज वन, राइट? एवरी वन ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. तो एवरी बॉडी मतलब एवरी बॉडी, लिटरली एवरी बॉडी, एवरीबडी जो बोलते हैं, इट्स एवरी बॉडी. सो वन वन इंडिविजुअल वॉज देयर. तो ये वाला ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है. होल दिल्ली वाज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे. होल दिल्ली वाज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या? होल दिल्ली एज अ सिटी, पूरा सिटी का सिटी सेलिब्रेट कर रहा था. बट वो कैसे हो सकता है? तो पर्सोनिफिकेशन हो गया. सिटी को हम पर्सन जैसे कैसे बोल सकते हैं वो सेलिब्रेट कर रहा था? तो दैट इज रॉन्ग. सो होल ऑफ दिल्ली वाज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, दैट इज द करेक्ट यूजेज. तो इडियोमैटिकली ये गलत है. Fourth, neither the dog nor is the cat responsible for this mess. Neither the dog nor is the cat. तो यहाँ पे neither nor के अंदर एक dog और एक cat की बात कर रहे हैं. तो या तो ये दोनों भी यहाँ पे responsible नहीं है. तो यहाँ पे in case of English when you are writing something like this, neither nor will have single subjects that are there. तो single verb आएगा, singular verb आएगा. तो is the cat responsible will be the correct usage. तो यहाँ पे कोई problem नहीं. 5. He knows to swim. He knows to swim क्या होता है? He knows how to swim होता है.
he knows to swim, ऐसा usage is not right. So ये वाला जो to है ना, that is not exactly a good way to put it. So that's why 5 is wrong. I look forward to seeing you, ये बहुत लोगों ने मेल में लिखा होगा. So this is also something that is right, grammatically correct. I look forward to seeing you. I am looking forward to see you. दोनों भी मतलब जनरली यूज करते हैं, so should not be a problem. तो यहाँ पे 1, 3 and 5 आर रॉन्ग. 1, 2, 5, 1, 3, 5 के अंदर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे. 2 is of course grammatically correct. So the correct answer here becomes option C. 1, 3, 5 are the incorrect sentences. Let's look at the next one. Which of the following is a grammatically correct sentence? So एक बार try कर लेना, then have a look at the solution that will follow. You had better told her everything or else you will lose a friend. तो अब यहाँ पे ना एक idiomatic usage है, वो अपने को ठीक से करना चाहिए. You had better told her everything नहीं होता. You had better tell her everything होता है. However awkward it sounds, it's not told, right? You had better tell her everything होता है. ठीक है. यू हैड बेटर टोल्ड हर एवरीथिंग का मतलब क्या है, मैं पास्ट में बात कर रहा हूं. यू हैड बेटर टोल्ड हर एवरीथिंग, राइट. सो यू हैड बेटर, इट वुड बी बेटर इफ यू टेल हर एवरीथिंग. तो यहाँ पे यू हैड बेटर टोल्ड हर एवरीथिंग बेसिकली मींस दैट पास्ट में वो चीज हो चुकी है. अब पास्ट में अगर वो चीज हो चुकी है तो फिर मैं उसको स्पेकुलेट कैसे कर सकता हूँ इन अ वे. सो यहाँ पे यू हैड बेटर टोल्ड हर एवरीथिंग इज इनकरेक्ट यूजेज. तो ए बी आर गॉन. यू आर लेफ्ट विद सी डी एंड ई. तभी सी डी ई देख लेते हैं. यू हैड बेटर टेल हर एवरीथिंग. You better had tell her everything. You better had tell her everything. नहीं, you had better tell her everything. तो better tell is the correct way to put this. You had better tell her everything. You better had tell her नहीं होता. Better tell her everything. Or else you will lose a friend. ठीक है. You had better tell her everything or else you will lose a friend. That is basically the correct usage यहाँ पे. So the correct answer here is going to be option C to this question. However awkward it might sound. Let's look at the last question of the set. तो यहाँ पे दिया हुआ है Surbhi's Instagram profile has 1.4 million followers and so on and so forth. एक बार try कर लेना and then have a look at the solution that will follow. Now ZAT के अंदर whenever you are dealing with jumbled paragraphs, what my suggestion is going to be, पूरा का पूरा मैच नहीं करेगा. ZAT paragraphs are extremely awkward. तो CAT के अंदर जो भी रूल्स पड़े हुए थे ना, all will be flat when it comes to the ZAT. Purely because अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, I will have paragraphs that will start with ands, buts, in addition to, except, in spite of. तो ये सारे जो हम बोलते थे ना कि कैट के अंदर नहीं, यहाँ पे तो स्टार्ट नहीं कर सकता पैराग्राफ, वो सारा चीज यहाँ पे गलत हो जाता है. योर पैराग्राफ कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, इट कैन गो एनीवेयर, इट कैन एंड अब्रप्टली. तो दैट थोड़ा सा फनी होता है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जंबल पैराग्राफ एंड दिस अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट. अब इसमें मेरे को देखिए बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द स्टार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. If you look at the options, S, Q and P are potential starters. Generally हम बोलते हैं कि P is a good starter because P में सुरभि के बारे में बताया गया है. But then if you look at all the four things that we have there, उसमें सुरभि का कुछ मेंशन ही नहीं किया है. Her Instagram profile या Instagram या उसके बाद क्या हो गया, मतलब it is filled with pictures of her posing. Yes, agree. But what happens after that? तो वो कहीं पे भी तुमको दिखाई नहीं देगा. And that's why ZAT के अंदर a better strategy would be for you to find out links. कोई भी दो चीजें अगर एक ही चीज के बारे में बात कर रही हैं, कोई भी दो स्टेटमेंट्स अगर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मेक्स योर लाइफ इजियर. तो यहाँ पे लेट्स सी, सुरभि's Instagram प्रोफाइल हैज 1.4 मिलियन फॉलोअर्स एंड उसमें कुछ पिक्चर्स हैं ऑफ हर पोस्टिंग इन डिफरेंट सेटिंग्स. फाइन. तो Instagram इन्फ्लुएंसर है अपेरेंटली, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. तो in India, reports suggest that WhatsApp is the primary tool for dissemination of political communication. अब इसका और सुरभि के Instagram प्रोफाइल का कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं. Political campaigns pay social media companies to promote their content, but Surabhi is not a social media company. Instagram, yes, is a social media company, but Surabhi isn't. Political advertising on social media comes in many forms and remains under examined in India. ये एक generic statement है. Many forms, कौन सा social media क्या है कौन है अपने को नहीं पता. लास्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर यूज्ड फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ कंटेंट. हाँ, अब ये बात होगी ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर यूज्ड फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ कंटेंट एंड सुरभि's Instagram प्रोफाइल हैज 1.4 मिलियन फॉलोअर्स. सो सुरभि इज अ मच बेटर एग्जांपल ऑफ a social media influencer than anything else that has been mentioned in QRS. So मुझे पता है that T और P linked होंगे. T और P एक के बाद एक आने चाहिए. And T of course introduces the social media influencers and P talks about one specific social media influencer. अब यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखेंगे, दिस हैज अ टीपी लिंक, ये भी टीपी का लिंक है, यहाँ पे भी टीपी का लिंक है, यहाँ पे भी टीपी का लिंक है, यहाँ पे नहीं है. सो ई इज मोस्ट डेफिनेटली नॉट माय करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट एग्जिस्ट. ठीक है. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट. अब यहाँ पे क्यू या एस में से कोई तो एक स्टार्टर होना चाहिए. In India, reports suggest that WhatsApp is the primary tool for the dissemination of political communication. दिया हुआ है, much more than Facebook और Twitter, ये दिया हुआ है.
ठीक है, सो क्यू इज फाइन, बट एस अगर देखेंगे, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया कम्स इन मेनी फॉर्म्स एंड रिमेन्स अंडर एग्जामिन्ड इन इंडिया। अब ये अंडर एग्जामिन्ड वाला पार्ट तो कहीं पे टच नहीं किया गया है। सो इफ इट इज देयर राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज, देन इट हैज गॉट नो इंटरफेरेंस व्हाटसोएवर विद एनीथिंग एल्स। बिकॉज अगर ऑप्शंस देखेंगे, एक ही ऑप्शन है जहां पे एस लास्ट में आता है, बट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट क्यू वर्सेस एस के अंदर क्यू इंट्रोड्यूसेस पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट, whereas S introduces political advertising on social media का concept, whereas for when it comes to Q talks about one specific social media का instance. So generic to specific यहाँ पे देखेंगे, so SQ seems to be a better link, तो यहाँ पे तुम्हारा B और C गलत हो जाता है। S should be my starter। अब S से स्टार्ट हो रहा है, मेनी फॉर्म्स में आ रहा है करके बोल रहे हैं, तो या तो वी विल गो फॉर एस क्यू या तो वी विल गो फॉर एस आर। एस क्यू अगर देखते हैं तो यहाँ पे एस सेज पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया कम्स इन मेनी फॉर्म्स। क्यू में बोलते हैं इन इंडिया रिपोर्ट सेज दैट व्हाट्सएप इज द प्राइमरी टूल, मेक सेंस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट अबाउट एस आर? एस आर के अंदर पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कम्स इन मेनी फॉर्म्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स पे सोशल मीडिया कंपनीज टू प्रमोट देयर कंटेंट। सो मल्टीपल कंपनीज की बात कर रहे हैं, एंड उसके बाद उसमें से एक कंपनी है व्हाट्सएप, उसके अंदर एक इन्फ्लुएंसर है, एंड वन ऑफ दो उसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंड वन ऑफ दोस इन्फ्लुएंसर्स इज सुरभि। सो दैट इज अ मच बेटर वे टू पुट इट कंपेयर टू ए। तो ए आंसर राइट नहीं होगा, डी आंसर राइट होगा, एस आर क्यू टी पी। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कम्स इन मेनी फॉर्म्स। आर मीट सोशल मीडिया कंपनीज को पैसा देते हैं। क्यों? उसमें से भी व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा चीज होता है। देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्फ्लुएंसर्स ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड सुरभि इज वन सच इन्फ्लुएंसर। So the correct answer here should be option D, SRQTP. That will be the correct combination of statements that will give us a nice paragraph that is logical in nature. Now, before we end, again, I would like to reiterate that the crash course for XAT is live now. Do check out the details by visiting the link in the description box below. And in case there is something that you need help with, something that you are getting confused about, do let me know in the comment section, and I will try to help you to the best of my ability.